Good morning, students. I hope you all are fine and enjoying learning at home. This is your history class. So, students, today we'll continue with our chapter, The First War of Independence, 1857. And the topics of today's lecture are causes of the failure of the revolt and results of the revolt. So, see the learning outcomes means what will you be able to do after the completion of today's lecture. Students, you all will be able to explain the causes of the failure of the revolt. Means revolt, it was a very big event, even then it was failed. What were the reasons behind it? Second, you will be able to write down the changes which were made in the administration of India after the revolt was suppressed. Third, you will be able to state the results of the revolt of 1857 कि इसके इस revolt के क्या results निकले. Before discussing today's topic, let's have a look at the topics which we have done yet. First, we had done the causes of the revolt. There were 5 major causes: political causes, economic causes, social and religious causes, military causes, and immediate causes. After that, we completed our next topic, course of the revolt, means from where the revolt started and to which areas it spread. Then major centers of the revolt, which we had marked on the map. Then main leaders of the revolt like Mangal Pandey, Rani Lakshmi Bai, Tantia Tope, Nana Sahib, Begum Hazrat Mahal, etc. Then suppression of the revolt means how the revolt was suppressed by the British. Now, today we will discuss the causes of the failure of the revolt. There are 5 major causes. First is started before the appointed date, then lack of unity among the rebels, then not widespread. Fourth, modern and sophisticated weapons of the British, then not strong leadership. Now we'll discuss these causes in detail. First, started before the appointed date. The uprising had been planned for months, बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड डेट. मीन्स ये कि रिवोल्ट अभी लेट होना था लेकिन ये अपॉइंटेड डेट से पहले ही शुरू हो गया. मीन्स पीपल वर नॉट रेडी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. It did not go according to the plan as the revolutionaries failed to spread it beyond central India and Delhi. और प्लान हमारा जो था स्केड्यूल टाइम से पहले हुआ तो जिसके कारण पूरे इंडिया में ये नहीं फैल पाया. It was spread only in central India and Delhi. If the plan had gone as per the schedule, the revolt would have broken out in many parts of India simultaneously, and it would have been very difficult for Lord Canning, the Governor General at that time, to control the revolt. कि अगर रिवोल्ट अपने स्केड्यूल टाइम पे होता तो इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में फैला होता और लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे उनके लिए इस कंट्रोल को स्प्रेस करना मुश्किल हो जाता. सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ लैक ऑफ यूनिटी. मीन्स जो लोग लड़ रहे थे दे वर नॉट यूनाइटेड एट ऑल. everyone wanted to fight for their personal motive. Like first point, there was no unity among the rebels. The idea of nationalism had not yet developed. There was no common ideology among the rebels. क्यों कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी? बिकॉज एवरीबडी वॉज फाइटिंग फॉर देयर पर्सनल मोटिव. लाइक सिपाहीज ऑफ बंगाल, दे वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ मुगल्स. बिकॉज बंगाल में उस टाइम पे मुगलों का राज था तो वो वापस अपनी वही मुगलिया शानो शौकत चाहते थे. एंड वाइल नाना साहिब एंड तांत्या टोपे, they tried to re-establish the Maratha power, and Rani Lakshmi Bai, she was fighting for getting her lost kingdom. Then third is not widespread. See beta, this is the map of India and you can see the places marked on this. There are Delhi, Meerut, Agra, Gwalior, Jhansi, Kanpur, Bareilly, Lucknow, Banaras and Barakpur. These were a few places where the revolt spread. मीन्स ना तो ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में फैला और ना ही साउथ में. मीन्स निज़ाम एंड सिंधिया दे वर नॉट देयर एंड पार्ट ऑफ द रिवोल्ट, सो it was not spread properly. The rising was not widespread. It was limited to north and central India. In the north, 6, the Nizam and Sindhyas in south, they were unaffected by the revolt. Then Gurkhas not only remained loyal to the British but helped the British in suppressing the mutiny.
गुरखाज सिर्फ लॉयल ही नहीं रहे ब्रिटिश के, इसके अलावा उन्होंने इस म्यूटनी को, इस रिवोल्ट को दबाने में उनकी पूरी हेल्प करी. नेक्स्ट रीजन वॉज मॉडर्न वेपन्स. The rebels could not match the sophisticated and modern weapons and the disciplined army of the British. ये हमें भी बताया कि बेटा शुरू से ब्रिटिश जो थे उनके पास अच्छे वेपन्स थे, गन्स, राइफल्स, कैनन्स एंड सो मेनी अदर weapons were there, and their army was disciplined. Moreover, an organized communication system and military strategies led to the British victory. और इससे ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम उनका बहुत अच्छा था. किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, इन द मीन टाइम दे वर एबल टू गेट दैट थिंग. और उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज अच्छी थी, जिसके कारण वो आसानी से इनको रिबेल्स को दबा सके. These were a few modern weapons and their disciplined army. Then weak leadership. The leadership of the revolt was neither strong nor gave direction to the rebels. ना तो स्ट्रॉन्ग थी लीडरशिप, ना ही कोई डायरेक्शन देने वाला था. लाइक बहादुर शाह जफर, व्हेन ही बिकेम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट, ही वाज 82, फाइन, एंड ही हैड नो एक्सपीरियंस टू फाइट फॉर सच अ बिग वॉर. सो इट इज सेड कि लीडरशिप वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. The Indian rulers fought to liberate their own territories, and the Indian rulers, which I already told you, that Rani Lakshmi Bai, Begum Hazrat Mahal, Nana Sahib, Tantia Tope, everybody was fighting to get their territories back. They did not think about the freedom of the whole country. Moreover, the company officials got timely help from the government of Britain, और company official को timely help मिल रही थी ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से. And now I hope you can write about the causes of the failure of the revolt. Now see, next step is result of the revolt. Basically beta, this is the result in administration of India. What changes had been brought at that time in the administration of India. जब result fail हो गया उसके बाद, लेकिन उसके जो impact थे, consequences थे, result थे, वो positive रहे. कैसे? First point, see, the rule of East India Company ended with Queen Victoria's proclamation of November 1, 1858. ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया और अब इंडिया जो था, इट केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम 1 नवंबर 1858. शी एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. क्वीन विक्टोरिया जो थे उनको इंडिया की भी एम्प्रेस का टाइटल मिला. शी गोट दिस टाइटल, the Empress of India. Then the British Crown took over the administration of India. A Secretary of State was appointed by the British Parliament. किस लिए secretary appoint किया गया? To look after the governance of India with the help of a council. The Governor General, he was given the title of Viceroy, the president, representative of the British Crown. गवर्नर जनरल जो होते थे उनको फिर टाइटल दिया गया वाइसरॉय का, who was a representative of the British Crown in India. Now it was our second outcome. You are able to write about the changes in the administration of India. See, now the results of the revolt. What were the common results of the revolt? The British reorganized the army to prevent any future revolts. उन्होंने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया और ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ और अच्छा एम्यूनेशन वेपन्स यूज़ करे उन्होंने, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा रिवोल्ट होता है तो उसको ईजिली सप्रेस किया जा सके. द पॉलिसी ऑफ रथलेस कंक्वेस्ट एंड एनेक्सेशंस ऑफ इंडियन टेरिटरी वॉज गिवन अप. जो अंधाधुंध ये लोग इंडियन टेरिटरीज़ को अपने अंडर कर रहे थे, उसको इनेक्स कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे उन पर, ये उन्होंने छोड़ दिया. देन इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द एश्योरेंस. इंडियन प्रिंस जो थे उनको क्या एश्योर किया गया? देयर स्टेट्स वुड नॉट बी इनेक्स्ड. उनकी टेरिटरीज, उनकी स्टेट्स उनसे नहीं छीनी जाएंगी. दे वर ग्रांटेड द राइट ऑफ एडॉप्शन. जो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में पढ़ा कि इफ एनी किंग इज डाइड विदाउट लिविंग द नेचुरल हियर, हिज प्रॉपर्टी, हिज टेरिटरी वुड बी ऑटोमेटिकली इनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश. कि अगर कोई राजा जिसका कोई बेटा नहीं था, कोई वारिस नहीं है, तो उसकी टेरिटरी ब्रिटिश इनेक्स कर लेंगे. तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि अडॉप्शन इज़ नॉट अलाउड, मतलब बच्चा गोद नहीं लिया जा सकता. बट आफ्टर द रिवोल्ट दे एग्रीड विद दिस थिंग. दे ग्रांटेड दिस राइट टू द इंडियन प्रिंसेस, द राइट ऑफ adoption.
Then see the next fifth point, full religious freedom was granted to the Indians. Indians को पहले ये insist किया जाता था कि they should adopt this Christianity. Fine, but after the revolt they had given full freedom of adopting any religion. Last is they were also given the assurance that high post would be given to them without any discrimination. अब बिना किसी discrimination के उनको हाई पोस्ट दी जाएंगी. जो पहले उनके साथ इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि इंडियंस आर ब्लैक, ब्लैक्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, है ना. दे वर facing this type of problems in army also. In army they were getting the higher rank was subedar only. So now it was announced that the Indians would be given high post without any discrimination. This it was a third outcome that you will be able to write down the results of the revolt. Thank you, and students, don't forget to fill the Google form that is given in the next link. Thank you.